एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में, मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी, और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Good afternoon, everyone. Thank you for joining us on this webinar of Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai presented by the management of Franchise India with an aim to introduce you with a new business opportunity at 12 o'clock every day. Today also we have a new business opportunity for all of you in F&B industry. But before we'll start telling you about the brand, let me just run you through with the Q&A process. If you have any questions during the webinar, I request you to keep sharing your questions into the Q&A box. We see some of you raising your hands during the webinar. I would request you to, instead of raising your hand, write your questions, leave your queries into the Q&A box so that we will take up all your questions post our presentations. So while we'll be running you through the presentation and we are giving you the brand download, you can keep sharing your questions into the Q&A box for a better clarity and to make this webinar more interactive. Our today's webinar is Jo Paji Foods. They are giving franchisee opportunity for the cafe under 16 lakh rupees with a quick payback option. We do have Mr. Ankur and Mr. Sahil from Jo Paji Foods here on this panel. Along with Mr. Ankur and Mr. Sahil, we have Mr. Samarth who will be helping you out in understanding of the commercial and the investment part. And we have Mr. Balraj from Franchise India team who's heading this brand into the North Indian market. So I would like to welcome all the panelists who have joined us today on this panel. And now I would like to request Mr. Sahil to take the lead and tell us more about the brand and also about the business opportunity they have to share with our participants who have joined us here on this webinar. Over to you, Mr. Sahil. Thank you so much, Neha, and very good morning to everyone who all are attending the presentation through the online mode. So, as Neha told you, our brand name is Jo Paji Foods. So, first of all, before starting it, I would like to tell you about how we have created that name, Jo Paji Foods. So, basically, it's come out of love and affection of our founder towards his nephew. His nephew's name is Jo Paji. So, because of his love and affection towards his nephew, he started to run his business by this name. So we started in 2020 by the name of Jo Paji Foods, and so I now just share the screen. Okay, so Jo Paji Foods comes with a cafe come restaurant franchisee mode. In this, basically, we have it is a multi-cuisine restaurant, the menu that we have, and I'll just give you an overview of it.
So the main aim that we have is that all the foods that are presented in a menu, it's all prepared and decided, and the recipes are done by Mr. Ankur, who is our founder. All the items are prepared by him. He has all the recipes. It is all his recipes that we would like to introduce. Okay. So basically, our main aim is that we want to introduce freshness in our taste. So the recipes that are made by Ankur, uh, it keeps the food fresh, even if it is frozen and it is served later on, it still keeps the foods fresh. And our best-selling products that we have, it's pasta, momos, sandwich, biryani, burgers, kebabs, French fries, North Indian, chicken fries, coffee, shakes, chocolate brownie, shakes, and Maggie. And apart from that, we also have Cooler Pizza with us, which is our one of the major hot selling product with the pastas. The quality that we have is that we want to run our restaurant in a QSR model, which is known as quick service response model. The food that we make, we want it to be delivered to the customers in a very quick time. That is the reason we have our own recipes so that the food can be delivered to the customer at a very quick rate. They don't have to wait for a longer time in the restaurant or at home for their food. And the recipes are such that it will maintain the taste also. It's not just quick, it is tasty as well. So as we know that India is a very high market for the food. In India, almost everyone has a view that they love food. India is known for its food market. Everyone have a tagline known as foodie. They love to eat delicious food and try different and new places, and that's why that's make India a very big market for the food and restaurants. And the only thing that keeps a restaurant and a cafe running, it's its taste and service. And in Jo Paji Foods, we deliver that. As we want to run on a QSR mode, which makes the food quick and the taste, we also maintain that taste over a period of time. So I would like to now give a brief introduction about our co-founder, Mr. Ankur Gupta. So basically, he has not done any masters in hotel management or anything. It's just a hobby that he has. And with that hobby, he wanted to create a business. He started cooking with his mother, who has helped him in a very long run also, who is a great teacher. And she's the one who has let Ankur explore different cuisines under her. And so in 2020, Ankur Gupta started, he thought that I should make this hobby, make this experience into a venture. So he started Jo Paji Foods in 2020. And without any marketing, we had got a very great response in 2022. And there was no marketing done before that.
it was only a word of mouth marketing because the people who visited Jo Paji Foods, it was their words that make it more valuable because the taste was such that we often used to get repeated orders from repeated customers. So that's how we thought that if without marketing we are getting a great response, then we should market it, and it opens up a wide range of franchisee also. So we thought that we should make it into a franchisee mode also, so that it can help us out. And even if there are guys who have a story background like Ankur, that they have a hobby uh, of making food or owning a restaurant or do a side business, and there are guys who are already working. So as we have a very good team of experts with us, so we can help out everyone in making their day, in making their restaurant. We have over 5 years of experience, and we have expertise team from different fields, like Ankur, who is the main head. He teaches the chef also. Apart from that, we have Mr. Vishal, who would look out for the sales. I myself is an advocate who would take care of the legal decisions. Apart from that, we have Mrs. Nisha Gupta also, who deals with marketing. So here in Jo Paji, you just don't get a franchisee deal. You also get a group of expertise who are willing and there for you to help you out to make the franchisee more profitable. And our main aim is that whenever you enter the market, even if you are new, so the day one of your franchisee will not be just day one. We'll make sure that it will be your 5 years of experience that we have plus day one. So whenever you are entering the market, it's not just day one, it's 5 years plus day one. I'll quickly run through the presentation that we have. As I told you that we have over 5 years, we have created a very strong network in the market. Currently, there are 2 outlets in Delhi NCR, and the third one is opening soon. The third one is a bigger one, which has a lot of sitting as well. And apart from that, there are many franchisees that would be opening in Jaipur as well. We have around 3 or 4 franchises that would be coming out within 3 months in Jaipur. So now I'll tell you about the franchisee mode that we are looking for. So we look around an area of around 300 to 600 square feet area, and the it will be basically on franchisee owned, franchisee operated, which is also known as FOFO model, in which franchises will be given out to you and it will be operated by the franchisee owners, but it will be taken care of by the corporate as well. That there would be regular inspections because we follow a health hygiene program as well. So there will be a person from the Jo Paji who would be reaching out to you to maintain the hygiene standards of the restaurant. And apart from that, they would also be helping out you during the marketing. Okay, so can we have Samarth to deal with the commercials? Sure.
Thank you so much, Sahil, for that. So, friends, as we are seeing over here as an opportunity overall, as Sahil mentioned, it's a franchise-owned, franchise-operated model. Be it the knowledge and the training, and maybe the supply of key ingredients is something that the brand will provide. So, we have a very good supply chain network in place, and also a central kitchen that would be able to cater to the different demands, be it with the new franchisees coming up and for other partners who are interested in partnering and becoming part of Jo Paji Food. So the minimum size that we are looking at is 300 square feet. Ideally, we are running it more, as I had mentioned earlier, as a QSR format with the food and the menu catering to such a concept where we are able to reach out to a larger audience as well, and gives you as investors flexibility to have different locations being targeted for your expansion. And what we are also seeing is it's not only a metro driven or maybe a tier one driven, but if investors are there from tier two and three cities as well, it's a big emerging market in India with tier two and three high demand, high focus, where customers are looking for good options, organized options which are there. And this is where we also come in place with our food and the technology and the innovation. So as I had mentioned, so the food itself, we have methodologies to keep them fresh, because that is a very important aspect with the supply chain and for your storage and inventory as well. So all these things, all this knowledge over years of experience that they're bringing in is offered to each and every partner. There would be QSRs if you have food courts, if you have other small locations as well. You can have dining or a takeaway model. If you have a slightly bigger place as well with the seating reasonable up to maybe like a 20 odd seater, we can also look at maybe those spaces with up to 600 square feet of space. So the day-to-day handling of the operation, the service, and the execution is something that the partner is expected to look after. The technology, the key ingredients, the supply chain is something that the brand would be able to offer to each and every partner. You have multiple options given the menu that we have. So be it the food or the beverages, different kind of concepts, which is there, the cooler pizza and others also. So new innovative ideas and the trending ideas, which is there in the market as well, is something that the brand keeps doing constant R&D. And yes, online orders is always there. Online is also becoming a fast evolving and growing market. More and more people are also ordering. So you have the flexibility, not only being reliant on the walk-in customers, but also the online orders which would be available. And the price points that we have over here is catering to a larger audience, be it students or the college going people or the corporates and families. So the menu has extensive range offerings to both catering to the young and the old and the masses as well. So it gives a very good opportunity for investors in key cities, even evolving or emerging cities, to have their model. Can we go to the next slide, Sahil? Just leave. So what we also get when we're looking at as a partner, can we move to, yeah. So what we're looking at as a partner, this gives you the flexibility as we were talking about and I was saying. So even if you're a young entrepreneur, you're just starting off and you want to have your business, or maybe you're a corporate employee if you want to have your own business. So food is a passion. If somebody is passionate about food and getting into the F&B industry, it gives you a very good opportunity with the investment that we'll also see. Is catering to a larger audience. More investors could also take part in this. The knowledge and the training, yes, is always provided by the brand itself with the comprehensive support, be it from the IT operation and the marketing front. So all our partners who are there, young entrepreneurs who want to have their own business, they're passionate about the food industry and they want to have their own setup, or people who are already having experience and they want to have a good brand like us and expand into new territory, new cities, and maybe have a larger strategic partnership with us as well, is something that we can always explore. So it is a model which is catering to a larger audience, more people who are starting off and maybe they're not comfortable with a very high threshold of investment as well. So it is a very attractive model for them, because what we're looking at is an investment around 16 lakh rupees. So which makes it easier, as a barrier to entry is not there, because what we have as investment wise, there is a very high demand in all the markets. Food being something that people are always
curious about, and the demand is always there. And with the new trends and new options which Jo Paji Foods provides to each and every partner, it will give you a much better foothold in any new market that you're coming up, and maybe especially with the developing market as well. Can we go to the next slide, please? What we are looking into as support mechanisms that we were talking about. So it's not only with the setup itself that we start off with. So what kind of setup, the design, what fit out needs to be done, how the branding needs to be done, how the whole interior and exterior needs to be done is something that the brand will guide each and every partner and support throughout the stages, because it's very important to have the appeal and over the years and the experience that the brand has developed. They know how the setup needs to work, how the kitchen would work, how the back and front would work in a restaurant, and how we need to maintain, not only the food and how it is prepared, but also for your staff to have, because it's the whole holistic experience that we're trying to give to all our customers who are coming. It's not only high quality food or large range of offerings that we're offering, but also a good experience, especially for people who are looking for QSR with a dining where the service execution also becomes very crucial nowadays. It's not only about the taste, but the whole experience that diners get. So if any challenges comes up, so the brand is there to support throughout this journey, so that each and every partner is comfortable operating by themselves and also is successful. It's a long-term relationship that we're looking into, and the family and environment that the brand is also creating from their side. What we're looking at operation side as well, so menu, recipe planning, the SOPs, the operational manuals, and the quality of the supply chain network would always be there as a support. And technology would also be there. So central level marketing, local level marketing, how to promote the brand at your local cities and areas is something that the brand would also help, because that is the guidance which is very important. It's not only the quality that we are able to maintain at the outlet, be it from the food or the service, but also how we project ourselves with the social media and other media channels also opening up for publicity and marketing is something that the brand would also help all our partners with guidance. And at central level also, they would be doing all these activities so that we have brand pull, which is very important. What the software which is required, the billing is something or would be provided by the brand. So the partner does not need to worry about the billing, the accounting, and other support, because that is provided by the brand to each and every partner, and the partner can easily just focus on the food and execution in their day-to-day activities, which is there. Can we move to the next slide, please? So when we are talking about investment now, investment is basically, if we start off with the 300 square feet of a location, it's about 16 lakh rupees that we're looking into as an investment bracket. So when we talk about your 16 lakh rupees, it is a total investment within which you have your fit out, you have your equipment, you have the kitchen setup, you have your franchise fee, IT, and all other fees included. So 16 lakh rupees would primarily have 3 lakh rupees of your franchise fee. GST would be as applicable. Then we have the setup, the fit out and the refurbishment and the kitchen setup would require about 10 lakh rupees, 10 to 12 lakh rupees, which would have your interior, your furniture, your tables, your kitchen, the equipment that is basic equipment which should be required, and also your dining, crockery, IT, and other initial inventory which you require to execute the services. So all in all, about 16 to 17 lakh rupees that we can get. And if you have slightly bigger model and space to also have dining, so about 18 lakh rupees that you can look into. So 16 to 18 would be your range, which includes everything: your franchise fee, your training, your design, your initial inventory, your setup, and your furniture, all the costs included that would be provided. And what we also expect from our partner is for them to be successful and contribute and work together with the brand to grow together. So the royalty as well, we've kept it about 5%, so as to all our partners are
not burdened with the royalty, especially with the initial 1 year or so when they're setting up, growing in the market as well. So that gives all our partners a very attractive opportunity where we are not that burdened with the royalty as well. The supply and the quality of the materials are also provided by the brand, or the guidance is provided to you during that time. So on an investment about 16 lakh rupees, what we get as a payback period is about 19 to 21 months at a conservative side. What we expect with the support and all our partners are able to attain this level of revenue. And what we want our partners to be doing is much higher than this return as well. So that is something all our partners can expect. So in a layman explanation, about 16 lakh rupees if you invest on an average 90% over a 5 year term. So that is the term of the agreement, 5 years. So what we can expect our partners to be getting is about 4.5x of their investment. So that goes up to almost 4 times of your investment, which becomes almost 80 to 1 CR that you can easily earn over a 5 year period. So that is the attractive opportunity for each and every partner. The setup is something that we are able to offer and makes it easier for you to open up your own restaurant. It becomes very crucial right now because see, when we are opening up a restaurant, it is important to know how the whole supply chain works, how the cooking and other procedures work, and the taste becomes really important. So all these is something that the brand is able to provide you with the training, the support, and the execution. So be it from the back end or the front end, and the final product which is offered to our customers is something that the brand will keep supporting you so that you are able to achieve these numbers and grow along with the brand itself. So I'll open it up to everybody. If you have any questions, feel free to put your questions in the Q&A box. I guess a couple of questions that we'll also take up, Sahilji and Ankaji, is basically when we talk about equipments, are there any special equipments, specific equipments that would be required given the offerings that we have in the market? In the kitchen equipment, I don't know. Correct. There are many equipments where I cannot define it, but I can name them. There is a griller, oven, and mixer, mixing blender, and a temperature maintaining machine which maintain the temperature for a given particular product basically. तो जैसे कोई टिक्की को मेंटेन करना, उसे फ्राई करके रख रखा है पर डे के लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसे रखना जाता है, उसकी मशीन होती है। बहुत सारी अलग अलग मशीन है जो अभी नहीं बता सकते। जब होती है तो हम अपने अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। जैसे अपना फ्रंट डोर हो गया, फ्रंट डोर, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, ब्लास्टर, बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई कर रखी होंगी। जब हमारी कोई डील होती है तो हाँ, जब हम स्पेसिफाई करते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स क्या है, टेस्ट पे सारा गेम है जो हम टेस्ट बेच रहे हैं। बाकी खाने की तो बहुत सारे QSR चेन है, कोई भी खरीद सकता है। दूसरी चीज, टेस्ट के साथ अभी रेट भी बहुत कम है जो पाजी फूड्स के, एज वी आर इनिशियली स्टार्टिंग दिस। ऐसा है क्योंकि आप किसी में भी जाएंगे 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है जब जाके आप एक आउटलेट रन करते हैं। उसकी भी श्योरिटी नहीं होती कि मार्केट सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। से बहुत सारे ब्रांड है जिन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पे उतर के सब डाउनफॉल कर दिया, नहीं सपोर्ट करते। फिर बट हमारा जो प्लान है वो 500-600 आउटलेट का है, तो अभी तो हम नहीं बैकआउट करते कहीं भी। पूरी तरह से कंपनी फंड कर रही है, क्योंकि एक्चुअली किसी भी जयपुर में जैसे हमने अभी अपना वो करा है एक्सपेंशन, तो एक 4 आउटलेट के लिए कंपनी का भी खर्चा आता है कि 35-40 लाख रुपए पर ईयर खर्चा आएगा, या 5 साल के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं जयपुर में। सॉरी। तो कंपनी भी पूरा हेलो, मैं ये कह रहा था कंपनी भी पूरा स्टोरेज मेंटेन कर रही है। जैसा अभी साहिल ने बताया था हाइजीन के लिए, हैविंग हाइजीन इंस्पेक्टर एंड स्टोर, मतलब बेसिकली मैनेजर फॉर दैट एरिया, जो हर आउटलेट पे हर दूसरे दिन या सिंगल डे पे आउटलेट विजिट कर रहा है आपके यहाँ पर। एंड ही इज अश्योरिंग दैट वी आर सर्विंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, विच मतलब जो रेसिपीज मैंने दी हैं मेरे अकॉर्डिंग बन रही है, नहीं बन रही। और जिस किसी स्टोर पे कोई रॉ मटेरियल का है वो खत्म हो रहा है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो वहां से ऑर्डर लेके वहां पे पहुंच जाए।
तो ऐसा हर दूसरे दिन के हम प्लान कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन हमारे एक बंदे का विजिट होना चाहिए और हर आउटलेट पे एक एरिया के अंदर। हम्म। Bharatji, I'll hand it over to you to lead further Q&A and Yes, ask other yes. questions जो Thank requirement होगा. you so much, Vinodji. Ankuji, I Thank you. would like to Sailji, know, can we stop sharing screen? जी. Ankuji, what kind of properties that we are looking forward for? It should be a sitting property or a takeaway will work out in this So we case. are so we are working on both the models as if we are मतलब अगर हम टेक अवे मॉडल पे काम करते हैं तो हम सारे प्रोडक्ट अपने नहीं लेते वहाँ पे हम लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ गेम खेलते हैं, कम प्रोडक्ट के साथ ज्यादा आउटपुट है। बिकॉज माइंड में सेट होना चाहिए टेक अवे में कि भाई मेरे को आज यही खाना है या नहीं खाना, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे मेन्यू प्रिसाइज करते हैं। अगर सेटिंग में हो जाता है तो हम मल्टी कुजीन में ऑलरेडी जा रहे हैं, जहाँ पे डाइनिंग हमारे पास राइस बोल्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं। So I'm sure अगर takeaway है तो I think the investment we should go down अगर or टेक investment would remain the सर same. इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही कम है अभी इस टाइम, 300 स्क्वायर फीट के लिए 16 लाख रुपए की डिमांड है। और कोई भी मॉडल पे आप जाएंगे अगर हम 16 लाख रुपए भी नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे। कंपनी सिर्फ 3 लाख रुपए ले रही है, उसके बाद आपके आउटलेट पे 5 से 10 लाख रुपए अगले 5 साल में खर्च करेगी। वो भी तो बेनिफिशियल होता है कस्टमर को कि नहीं भाई, क्योंकि कई कंपनी करती है जैसे फ्रेंचाइजी फीस ले गई हमारा काम खत्म जी, हम नहीं कर रहे। But we are not on that part. We have to go through and we understand what the problem is going through the outlet and how we can run and we can change the marketing strategy for that. Lovely, Ankuji. Ankuji, now on the foods, we are giving frozen foods or fresh foods also सर वी in आर वर्किंग inventory. ऑन बोथ। जैसे बर्गर पैटीज वगैरह हो गई, दे आर फ्रोजन, बट द बंस एंड द वेजिटेबल्स दे आर फ्रेश So this, सप्लाइड the हर। buns and the vegetables they have to procure from the local market or will be given by सप्लाइड your बाय द कंपनी, inventory. नहीं इट वुड बी सप्लाइड बाय द कंपनी। जैसे मैंने अभी बताया था हमारा एक एरिया मैनेजर होगा जो हर Hmm. स्टोर पे जाके लुक आफ्टर करेगा, जो हर दूसरे दिन हर सेम डे पर वो डिलीवरी करेगा। जैसे बंस खत्म हो गए, ब्राउन ब्रेड्स खत्म हो गई जो सैंडविचेस में यूज हो रही हैं, अभी हम रिसेंटली ना उसके अंदर हम गुजरे हैं मिलेट बेस्ड बंस, मिलेट बेस्ड पिज्जा बेस, क्योंकि बाजरा गेहूं, क्योंकि हम मोदी जी का भी G20 में यही था कि हम मिलेट्स को सपोर्ट नहीं करते, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा उगता है। और हेल्दी कॉन्सेप्ट पे भी हम आ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साहिल में विशाल हम तीनों ने बैठ के डिस्कस करा था। अगले 6 महीने के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को अपने आउटलेट के अंदर उतार देंगे। सारे जो हमारे बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं और पिज्जा है उनको वो मिलेट बेस्ड हो जाएंगे। I'm sure the POS and the inventory management would be given by the uh, within this investment हाँ, or it will, नहीं नहीं, इट वुड बी गिवन अंडर दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 1 year। इट वुड बी अ रिन्यूअल फीस फॉर अ सॉफ्टवेयर, स्मॉल स्मॉल रिन्यूअल फीस ऑफ अराउंड 10 to 12,000 rupees। okay. But in which all areas we are looking forward for expansions? सर In Delhi NCR only or some other locations too? Sir, actually, we are looking in Delhi NCR from through Franchise India, but we are expanding alone in Jaipur, आपका MP, Bhopal, Lucknow. We are searching also that areas. Okay, good. And you are open for Lucknow side and Hmm. other location side too. We have two, three queries of MP also. अंकुर जी, मैं ये मार्केटिंग एक्टिविटी पे थोड़ा सा और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे हम जो ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे स्विगी जोमेटो पे भी करेंगे या बिल्कुल सम अदर और अपना इन हाउस कुछ है? सर, देखिए जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है फॉर जब वो बनता है आउटलेट, कोई डील क्लैक होती है तो 3 महीने तो वैसे ही हम मार्केट कर रहे हैं उसको जब तक बन रहा है। उसके बाद भी हम जब वो बन जाएगा 3 से 4 महीने के लिए हम जोमेटो, स्विगी और फिर उसके बाद आपका फेसबुक एड्स मैनेजर हो गया, वहां से एड थ्रू करते हैं जो आपका इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक और काफी व्हाट्सएप वगैरह पे भी आपको ऐड पे आता है। और उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उस एरिया के आसपास, जो फिजिकली लोग बाग वहाँ पे सर्वे करते हैं, मैं पैम्पलेट बांटते हैं, अवेयर करते हैं यहाँ पे कुछ खुलने वाला है। क्योंकि लोग बाग अवेयर होंगे जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा पता चलेगा कि अभी कुछ खुला है। तो उस पे काम करते हैं। अगर ये भी काम नहीं करता तो फिर चेंजेस करके और काफी चीजें हैं जो हैं हमारे दिमाग में, 2 4 चीजें जो हमने करी हैं अभी एक आउटलेट के लिए। अभी आई थिंक वी हैव गॉट टू आउटलेट जो हमारी चल रही हैं। जरा हम्म। इनके सेल्स फिगर्स और प्रोसेसिंग अगर थोड़े से आप बता पाए व्यूअर्स को। सर हाँ, देखिए सर, ये जो हमारी सेल्स है हमारे पर आउटलेट से मिनिमम सेल 4.5 से 4.5 लाख रुपए की होती है। मिनिमम सेल की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पे जा ही नहीं रहे।
कम से कम इतनी सेल होती है, और यही सेल 10-12 लाख रुपए ही पहुंचती है लोकेशन के अकॉर्डिंग। जो हमारा वो आपका वैशाली वाला एक और आउटलेट प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वहाँ की पर मंथ की सेल हमारी 9 लाख है फर्स्ट मंथ से। तो हमने ये एक्सपेक्ट करा है वहाँ पर काफी बड़ा अच्छा एरिया बना है। और सॉरी, वो वहाँ अभी तो उसमें मतलब 1 महीना लग जाएगा, अभी स्टार्ट हुआ है वहाँ पे वर्किंग, बट ये है कि नेक्स्ट मंथ से उसमें अच्छा आउटपुट आएगा सिटिंग लाइनिंग के साथ। अभी हम कुछ लॉयल्टी प्लान्स रन कर रहे हैं फॉर द करंट व्हाट यू कॉल आउटलेट्स, और जो जो ओपन होने वाली हैं उनके लिए कुछ प्लान, जैसे लॉयल्टी प्लान्स वगैरह होते हैं थ्रू हम्म, CRM वगैरह। अच्छा, हाँ मैं समझ गया सर, कि जो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, इतना प्रोडक्ट कंपनी की साइड से जाता है, वो हम स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्टमेंट दी है उसके अंदर डेढ़, आप देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए की प्री इन्वेंट्री तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। जो अभी हम अलग से कुछ उसमें ले नहीं रहे, 1.5 लाख उसमें इनिशियल चलाने के लिए, और जो 1.5 लाख की इन्वेंट्री है वो 1.5 लाख से ही 5 लाख का सेल कर सकता है, इतनी बड़ी इन्वेंट्री होती है। और उसके बाद जब हमारे आउटलेट जो खुलते हैं उसमें 20,000 रुपये पे 5,000 रुपये ऐसा समथिंग हमारा हैगा, जो हमारा चल रहा है कि 5-6 हज़ार रुपये इतने महीने में, अगर महीने के अंदर लाख रुपए की परचेज होती है तो 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल आपको फ्री जाता है इस अकॉर्डिंग। हमारे एक व्यूअर है, वो पूछना चाहते हैं कि एवरेज टिकट साइज क्या है सर हमारे। एवरेज टिकट साइज जो है 200 से 250 रुपये का है पर पर्सन। अब ये ओके। एवरेज टिकट साइज इससे डाउन तो जाएगा नहीं सर, क्योंकि अभी हम मिलेट्स में आ रहे हैं, तो यही इस पे ही काम कर रहे हैं मिलेट्स वाले प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें बनाने में भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाती है, और जो जिम वाली पब्लिक को हम मिस कर रहे थे हर आउटलेट से, वो जिम वाली पब्लिक को भी हम अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी साइड को। ओके, हम्म। then I think Neha, from my side all done. Please, from your side can go ahead. हम्म। तो सर जो पाजी फूड्स, मैं तो ये चाहूंगा कि ट्राई क्या लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है इस टाइम पर। आपको कम कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे, बट जैसे जैसे ग्रो करता है तो वैसे वैसे आपको आपको इतनी इन्वेस्टमेंट में जो पाजी फूड्स मुश्किल हो जाएगा मिलना अच्छी टीम के साथ। और हम भी अच्छे पार्टनर ढूंढ रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि कोई भी आके इन्वेस्ट कर देगा हम सबको आउटलेट दे देंगे। वी ऑल्सो वेरीफाई दैट पार्टनर कि अगर वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म पे रन कर सकता है नहीं कर सकता, बिकॉज अभी इनिशियल डेज पे ऐसे ऐसे पार्टनर चाहिए जो हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ स्टैंड कर सकते हैं हर जगह पर। ना कि ये कोई पार्टनर हो कि भाई उसने 1 महीने चलाया और दूसरे महीने बोला कि भाई मेरे बस की नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते। Yes, अंकुर जी, one more thing. The property जो आप बता रहे हैं related, it should be self owned और even rent पे चल जाएगा? रेंट पे चलता है सर, उसके लिए हमारी टीम सर्वे करती है उस रेंटेड एरिया को, और वहाँ की वीडियोस वगैरह, वहाँ सोसाइटी का अवेयरनेस कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसी अगर लोकेलिटी है। हाँ, अगर एक पर्सन है, if he wants to go on rent side, हम्म। तो ब्रांड की तरफ से हमें मतलब क्या बोलते हैं, प्रमोट सॉरी लोकेशन या फाइंड करने के लिए कोई हेल्प आइटम मिलेगा? लोकेशन फाइंड करने के लिए, हाँ जी। हाँ सर लोकेशन फाइंड करने के जैसे लिए। take an example, I'm an investor, I'm looking forward for something in Noida. So हम्म। is there any team of yours that who can find a good हाँ location for me? यस ऑफ कोर्स सर, देयर इज a team of 3 people, Priya, and there is 2 more people under it। हर जो लोकेशन को वेरीफाई करते हैं और लोकेशन ढूंढते हैं कस्टमर के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डील जो होती है जो कस्टमर ढूंढना चाहता है उससे हम कंफर्मेशन लेने के लिए टोकन टोकन अमाउंट हमारी कंपनी लेती है, जो रिफंडेबल होता है कंप्लीटली, आप काम करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई मतलब नहीं, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई आप काम सीरियस है इस काम के लिए। तो उसके बाद हम 10 दिन का टाइम लेते हैं हमारी टीम, और ऐसी 4 से 5 लोकेशन डिसाइड करती है जो उसको भेजी जाती है बंदे को, फिर वो वहां पर उसे विजिट कराते हैं हम, क्योंकि वो हमने तो सर्वे कर रखी है वो कैसी लोकेशन है, बस वो उसको कंफर्मेशन चाहिए, वो कंफर्मेशन होते ही फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। Yes, yeah, please, if you can continue. Thank you so much, Mr. और Balraj. Thank you, Mr. Ankur and Sahil. I think it was a wonderful, brief introduction which you have provided related to the brand, and I think you have covered almost all the questions. One question which I would want to ask: what if you can just let us know about the monthly sale of any of your outlet at present? हम देखिए मंथली सेल, मैं अपने आउटलेट की बात करता हूँ। पहले 2020 में जब स्टार्ट करा था तो जीरो मान लेते हैं, जीरो थी हमारी सेल, हम कुछ नहीं थे। बट रिसेंटली ग्रेजुअली जैसे हमारा लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में भी एक एवरेज हम मतलब 2.5 के लाख के अराउंड हम क्रैक कर पा रहे थे। उसके बाद जब 22 आया लॉकडाउन के बाद, तो उसके बाद हमारी जो सेल मिनिमम जाती है एकदम, वो मिनिमम जा रही है हमारी 30 31 5,62,800
₹854, जो अभी हमारी करंट एक आउटलेट सेल कर रहा है, जिसके अंदर सर वर्किंग कैपिटल सिर्फ 1 लाख, 1 लाख 92, 1,20,000 के अराउंड वर्किंग कैपिटल हमारी खर्च हुई है उसमें। अब पूरा हम सो प्रॉफिट पे अगर थे। सबके लिए रेफरेंस के लिए यही है कि सारे आउटलेट से मिनिमम हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द ग्रोथ एंड जो हम देख रहे हैं अपने अलग लोकेशंस में भी, आपका 4.5-5 लाख रुपए आप कर सकते हैं इजिली, जो हम एक्सपेक्ट हम्म। करेंगे। अच्छी लोकेशन है वो 9-10 लाख रुपए भी हम्म। कर सकती है, क्योंकि हमारी दूसरी लोकेशन भी वैसे परफॉर्म कर रही है। तो एवरेज है, लोकेशन इज वेरी की, जो जिसके फीजिबिलिटी आपके लिए ब्रांड हेल्प कर रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए कि लोकेशन सही हो तो ब्रांड अपने एक्सपीरियंस से पूरा वो जो सेटअप आपका कैसे करना है, क्या लोकेशन सही रहेगी, वो लोकेशन आपके लिए हेल्प करेंगे, गाइडेंस जो आपको चाहिए होगी। एंड आपके जो सेल्स वगैरह है उसमें भी ब्रांड सपोर्ट करेगा, मार्केटिंग और अपने अलग इनिशिएटिव से भी, कि आपके पास में वो कस्टमर पुल आता भी रहे। आपकी कंट्रीब्यूशन, आपके लिए सपोर्ट के लिए द ब्रांड वुड ऑलवेज बी देयर, कि आपको सपोर्ट करता रहेगा। एंड आपकी सारी एक्टिविटी, तो इन्वेस्टमेंट जो हम देख रहे हैं उसमें बैक आपका पूरा 16 लाख रुपीज में सारा सेटअप, इन्वेंट्री सब कुछ दे रहे हैं, सो दैट इट मेक्स इट इजियर आपको उसको सेल्स कंडक्ट करने के लिए। आपका सारा फोकस सिर्फ उधर ही रहना है कि आपने डे टू डे एग्जीक्यूशन करने हैं, बना के खिला के टेस्टी फूड कस्टमर्स को पुल करके उनका एक्सपीरियंस अच्छा दिलाना है। बाकी सारा जो सपोर्ट है बैकएंड में, सारा उनके पास ब्रांड आपको दे रहा है, बीएड आपका आईटी सपोर्ट चाहिए, आपको मार्केटिंग गाइडेंस चाहिए, या आपको फीजिबिलिटीज जो चाहिए, या आर&डी चाहिए, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, आपके मेन्यू में इनोवेशंस आते रहेंगे, तो इट वुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पार्टनर जो इसका रहेगा। अंकुर जी, साहिल जी, Wonderful explanation. एनी लास्ट अपडेट्स आपकी तरफ से, कोई मैसेज अपने इन्वेस्टर्स को आप देना चाहेंगे उसके लिए? बिल्कुल सर। आ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पाजी एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर, जो एक नाम के साथ नाम, कैची नाम मिल रहा है आपको। दूसरा, सारे प्रोडक्ट्स एंड रेसिपी टेस्ट पे सारा गेम है। अगर कस्टमर एक बार भी आपके स्टोर पे आता है तो सेकंड टाइम वो आपके टेस्ट की वजह से आपके स्टोर पे आ रहा है, और वो 5 लोगों को रेफर भी कर रहा है उस चीज को। वरना बर्गर सब बेच रहे हैं, पिज्जा सब बेच रहे हैं, पर डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो टेस्ट पे गेम खेला जाता है, और आपके क्वालिटी कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को। और जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बताया था, हमें सारी ब्रांड से अलग क्या अलग करेगा, वो हमारा मिलेट कॉन्सेप्ट अलग करेगा, जो अभी कोई मार्केट के अंदर नहीं करता। और हमारे पास जो राइस बोल्स वगैरह आते हैं छोटे, जो आजकल मतलब 40 to 45 एज के लोग प्रेफर करते हैं कि हम खाना ही खाएं, सैंडविच बर्गर नहीं पसंद आते हैं, तो उस सेगमेंट को भी हम टारगेट करते हैं कि वो लोग भी आकर हमारे यहाँ पर अपना वेट करके खा सकते हैं आराम से, उनका पेट भी भर जाएगा डिलीशियस फूड के साथ। और बाकी हर प्रोडक्ट के अंदर एक मॉम्स टेस्ट होगा, क्योंकि वो मेरी मम्मी ने मेरे को दिया है, जो जैसे भी करके हम दोनों ने बनाया इस जी। ब्रांड को। जो अलग करता है सबसे अलग, कि हाँ भाई। हेलो। डेफिनेटली, हम्म। डेफिनेटली जी। हाँ। तो साहिल जी, आपके एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर इन्वेस्टर्स? Yes, so basically, जो main message ये है that if you are investing with us, so it's not just your money. We uh, we share it as कि जो आपका money है आपका loss नहीं होना चाहिए. So we try to make sure that जितनी भी हमारी expert team they are with you and they will be guiding you in every throughout. जैसे अंकुर ने बताया, even if you are investor, just an investor and you are new to this field, so we have a specific team जो location find out करेगी, who will help you out finding a best location for you. पहले we can sort out the localities and then we can specify the sites जहाँ पे हम फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम खुद सेटअप में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इंक्लूडिंग द इंटीरियर्स, किचन इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ें उसके अंदर ही इंक्लूड होती हैं। तो इंटीरियर्स भी जो होता है, हमारी स्पेसिफिक टीम एक इंटीरियर्स की भी है जो सारे इंटीरियर्स आपको करके आपको एक वर्चुअल वीडियो बना के दिखाती है दैट दिस इज हाउ इंटीरियर्स विल बी डन। उसमें भी कलर पैनल्स आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट कलर पैनल्स, कलर पैटर्न्स जिसमें से आप सेलेक्ट करके देन वी कैन मूव अहेड। सो माय मेन मैसेज इज दैट whenever, as I told you, when you are entering this field with Joe Paji, it will not be your first day.
as I told, it will be our 5 years of experience plus your day. Thank you. Thank you so much, Amgaji, Sahilji, for your message. Neha, I'll hand it over to you for the closing remarks. Thank you so much, Samar. Thank you, Mr. Balraj. Thank you, Mr. Ankur and Sahil, for a wonderful brief about your brand. I wish you all the good luck for the brand. As I can see, there's a lot of potential in your brand. And the investment size is also quite feasible for anyone. Any mid-class person can also plan to start this kind of business easily. So wish you all the good luck. I hope you will receive so many prospects very soon. Guys, I hope that the brand details which we have shared with you are going to help you in understanding the brand in detail. If, in case you want to connect with us, you can reach out to our hotline number. Also, Mr. Balraj has dropped down his contact details. You can directly call to him. Our team is going to get in touch with you within a day or two to take the conversation further. Tomorrow, again, we are coming up with a new business opportunity, as we are committed to share a new business every day with all of you. I have already shared the registration link into the chat window. You can click on that link and you can get yourself registered in advance, and you can join us tomorrow at sharp 12 p.m. Tomorrow's brand is Arushi Oswal. They are into makeup and hair, and they have 18 plus years of brand legacy. Now they are coming up with a franchisee opportunities. It starts with 40 lakh rupees. To know more detail about this brand, join us tomorrow at sharp 12 p.m. I hope you all will have a wonderful day ahead. Thank you, everyone. Thanks for joining us. Thank you.